Okay, we'll continue with the next part. In the last session, we have completed a major part of the chapter, that was isomerism, which was classified broadly into structural and stereo. Structural के अंदर we had talked about 4 subtypes, which was linkage, ionization, coordination, and hydrate या solvate isomerism. And under the stereo, we had discussed about 2 subtypes, that is GI and OI, geometrical and optical isomerism. Okay, so that is the mind map you have to remember for the isomerism. And general form of complexes मैंने दिए थे, जिसके cis trans या फिर dextrolevo या फिर the structural isomerism we had discussed. So if a question comes in the form of the example, you have to just try to convert into a general form, and through the general form you have to identify the corresponding isomerism. Now, after the isomerism, there is a short topic about stability of the coordination compounds. Stability of the coordination compounds. Now, first of all, for any coordination compound, what is the species which are required? कोई भी complex बनने के लिए what species are required? Ions. Ions. So the cation is in the form of a transition metal, which will be called as a Lewis Base. मेटल एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? Donates. मेटल कैसा डोनेट करेगा? Sorry, it accepts donate. Yeah. Metal is the central metal which is having the tendency to accept the electron pair from the ligands. तो लोन पेयर डोनर्स कौन हुए? The anions. The anions. तो anions हो सकते हैं या neutral species हो सकते हैं, but the lone pair donors would be the ligands or the Lewis bases, and the metal over here which can be neutral or positively charged are the lone pair acceptors. मतलब for any coordination complex I can write Ma+, that is the Lewis acid or the lone pair acceptor. अब A+ मतलब either it can be positively charged or it can be neutral. And along with that, the ligand which is having a charge, that is X minus. अब इसको generalize करेंगे तो I can write it as NX minus. ठीक है, या फिर X minus ही generally लिखते हैं, that is not a problem. So this ligand which is negatively charged or it can be neutral will be the Lewis base. ठीक है, and the number of ligands would be decided by what parameter of the complex? कितने ligands होंगे? The number of ligands in the complex is determined by what factor? If I have 2 ligands in the complex, 4 ligands in the complex, 6 ligands in the complex, what is this number called? Coordination number. वही तो पूछा ना. The number of ligands in the complex is governed by coordination number. Now, if I have a combination of a metal cation and the ligand anion with the number of ligands decided by the coordination number, then the complex formed would be MLN. Because मैंने n ligands लिया ना, तो यहाँ पर complex में LN बन जाएगा. अगर 2 ligand है तो L2 होगा, 4 होगा तो L4, 6 होगा तो L6. Agreed? Yes, sir. And this negative charge is the charge on the total complex, which is actually equal to +1 of the metal and -2 of the cyanide. Aki nahi? Yes, sir. So मुझे बताओ, based on this charges which is generally given, what is the charge on the complex now? A plus X minus. So A minus X. Nahi. One thing is missing. A minus NX. It will be A and minus N into X. Because A is the charge of the metal and total charge on the ligands will be the charge on the ligand into the number of ligands ना. तो यहाँ पे -2 के लिखा, -1 into 2. वैसे यहाँ पर जो भी ligands होगा और जो भी उसका charge होगा
उसके हिसाब से टोटल चार्ज होगा -nx. So just add up them and you get the charge on the complex, correct? Yes, sir. Now, if this combination of Lewis acid and Lewis base forming a complex is in equilibrium, then how do we write the equilibrium constant for this? So MLN A minus Generalize karo, ratio of what to what? the ratio of product to the reactants. Concentration of products to the concentration of reactants. मतलब कोई भी equilibrium reaction है और उसका constant लिखना है, तो it is ratio of product का concentration, that is m ln A minus nx upon the ratio of the reactant concentration. मतलब m A plus and L x minus and raised to the power equal to its. Stoichiometric coefficients. So यहाँ पे तो 1 है, but this will be raised to n. Yes or no? Yes, sir. Now this equilibrium constant for a metal is called stability constant, and that's why represented by Ks. Now, if this stability constant is more, meaning the concentration of product is more as compared to reactants, yes or no? Yes, sir. And if the concentration of product is more, the equilibrium is more on which side? Right side. On the right side. इसका मतलब the complex का stability will be dependent on the concentration of the complex, and more the concentration of the complex, more will be the stability constant. Yes or no? Yes, sir. Therefore, I can simply say that higher the stability constant of the complex, more is the stability. Is that justified? Yes, sir. Higher is the stability constant, more is the stability. अब इस फंडा के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है? Let's say you are being given the 3 complex formation reactions and उनके सामने their stability constants are given indicated by a letter K. Now looking at the values, tell me which of these complex is more stable. So CONH3. The third one, and that is obviously understood by the value of the equilibrium constant. Switch on the cameras, please. Doyle, Daksh, Huzefa, Aman. So here, if I talk about the stability order of the complexes, agar ye question aaya, to the answer will be 3, then 2, and then 1. Clear? Yes, sir. अब ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिटरमाइन कैसे होती है? So practically there are some factors which govern the stability of the complex. The first factor over here is charge to size ratio. Charge to size ratio. And the relation with this parameter or factor is directly proportional. Matlab, higher the charge to size ratio of any metal ion, more will be its stability. ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज और साइज का जो रेशियो है वो लिया जाता है, और जितना ज्यादा रहेगा उतनी स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होगी. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय Irving William. That is why this order which I'm giving is very famously and importantly called Irving William order of charge to size ratio. और वो रेशियो क्या है? It is copper 2 plus followed by nickel 2 plus, then coffee यानी cobalt plus 2 Fe plus 2, उसके बाद mancard मतलब Mn2 plus and cadmium 2 plus. अब ये आया कैसे उसका भी लॉजिक आप समझ सकते हो. If you look at all the ions, one thing is common in them. Sir, 2 plus charge. The 2 plus charge, मतलब charge is fixed. So what is variable? The size. Now, if I talk about the 3D transition elements, that is varying from scandium to zinc,
what happens to the size as we move from left to right? Decreases. Decreases. So don't you agree कि copper और zinc जो कि end में होता है, they would be very small ions. Yes, sir. और हमने ये भी देखा था कि copper 2+ वर्सेस zinc 2+ में zinc सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन zinc का completely filled इलेक्ट्रॉन होने की वजह से there was electron repulsion and the size of Zn2+ was slightly So it was higher than copper. higher than copper. मतलब in the transition series सबसे छोटा आयन कौन? Copper. कॉपर. तो अगर साइज सबसे छोटा होगा तो चार्ज टू साइज का रेशियो So it will be greatest. इट विल बी ग्रेटेस्ट. दैट्स इट. इसीलिए कॉपर सबसे पहले आता है. ठीक है, तो ये जस्ट 6 आयंस है. इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो याद रखना, मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया. कॉपर इनफैक्ट सारे आयंस का चार्ज तो हमने फिक्स रख दिया है. व्हाट इज वेरिंग इज साइज. तो इन सब में द स्मॉलेस्ट साइज इज ऑफ कॉपर एंड दैट इज व्हाई द चार्ज टू साइज रेशियो इज हाईएस्ट. एंड सबसे बड़ा जो है वो कैडमियम है, इसीलिए उसका चार्ज टू साइज रेशियो सबसे लोवेस्ट है. Why all the cameras are off? So my network is down there. So Doyle. that's hard to leave at the beginning of. Lisha, Daksh, Aman. Okay. So first factor which governs the stability is charge to size. दूसरा factor है nature of the ligand. Now ligand का काम क्या है? So to donate electrons. So the nature of ligand would be related with the stability as the ligand which is having the simpler or the easy tendency to donate the lone pair would be acting as a better Lewis base. हाँ कि नहीं? Yes. Yes, sir. मतलब the nature of the ligand, can I say it relates to the strength of the Lewis base? जितना Lewis base अच्छा रहेगा उतना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी. Now if I have the anionic ligand of NH2 versus a neutral ligand of ammonia, which will be a better Lewis base? NH2. A negatively charged. Because of the negative charge, the electron density around the nitrogen is obviously higher as compared to the neutral species. तो कोई भी charged ion उसके neutral species से ज्यादा better Lewis base होता है. बराबर? Yes, sir. अब अगर मैं दो neutral species को compare करूं, ammonia versus water. Now both are neutral, so how will the Lewis base का strength be compared? The more number of lone pair of electrons. Oh. That's a wrong concept. एटम पे लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. दिस इज रॉन्ग. एलिमेंट पे कितने भी लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर डोनेट हमेशा एक ही होता है. दो वाटर हैज 2 लोन पेयर, इट डजंट डोनेट बोथ द लोन पेयर्स, राइट? Yes. सो डोनेट एक ही लोन पेयर करता है ना. उसका डोनेट करने का टेंडेंसी डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑन विच द लोन पेयर इज प्रेजेंट. And this in turn will be decided by electronegativity of the donating atom. अब सोचो जरा, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी So ग्रेटर होगा. बिकॉज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इट इज नॉट अट्रैक्टिंग द लोन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. तो ऑब्वियसली इट्स लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी वुड बी हायर. यस और नो? Yes, sir. तो अमोनिया वर्सेस वाटर में नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन इज द डोनेटिंग एटम व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. The nitrogen. तो अमोनिया इज अ बेटर ल्यूइस बेस. समझा? Yes, sir.
तो ये जो वैल्यूज आती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, that is dependent on two important factors. The Lewis acid factor is the charge to size ratio, and the Lewis base factor is the nature of the ligand, which is related with the strength of the Lewis base. Clear? Yes, sir. Now, there is a question given. The stability constant K of a complex, silver cyano complex, is 5.5 into 10 raised to 18, while that of the silver amine complex is 1.6 into 10 raised to 7. Explain why the cyano complex is more stable. So the one with the greater K. So Perfect. HECl. So one-liner answer is simple, that the stability of the complex is determined by the stability constant, and higher the K value, higher will be the stability. That's it. खत्म. और एक चीज, इन दोनों में there is metal or the Lewis acid which is common. What is differing? So the So the ligand. ligand. So if you look at the cyano ligand versus the amine ligand, which would be a better lone pair donor, So cyano, and why? because it has negative charge. Perfect. समझा? तो सिल्वर के केस में the charge was same in both of the complexes, but the complexes have the different ligands, and ligand का फंडा simple है, negatively charged ligands are always better Lewis bases as compared to the neutral species. Fine. Yes, sir. So that is how you can justify the answer for this. Now we come to the next important part of the chapter, the theories of bonding in complexes. तो अब तक हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अलग अलग बॉन्डिंग थ्योरीज देखी है, एंड वी हैव डिस्कस्ड देम इन द लास्ट ईयर चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इफ यू कैन नेम सम ऑफ द थ्योरीज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग So from MOT, the last BBT, chapter. BESPO. MOT, BBT, हाँ. So BSEPR. VSEPR, very good. So then that the two scientists. बोलो. So the hybridization one. The hybridization Paul concept. something, Paul Slater or something. Paul Slater, yes, yes. और उसके पहले अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से जाए, तो सबसे बेसिक बॉन्डिंग का थ्योरी, So Dalton's atomic. नहीं, that was not that was the atomic theory. वो structure of atom के लिए था. The simplest of the Lewis bonding bond. theory was given by Lewis. Lewis. Octet rule, है ना? तो सबसे बेसिक था octet rule. Then octet rule का failure आया, तो the next theory was VBT, valence bond theory. फिर valence bond theory के भी drawbacks थे, तो उसके बाद there was a concept of hybridization. और hybridization के relation में ही we had the VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory, and lastly we had one very important theory called MOT, that is molecular orbital theory. बराबर? Yes, sir. तो अब coordination compounds के bonding को समझने के लिए there are two theories which are applied over here. One is VBT and other is the वो नाम हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, but it will be called as the crystal field theory, CFT. That is not the theory which we had studied in the bonding for the covalent compounds, but it is the theory especially for the complexes. A VBT is something which we have already studied. Can you tell me some important postulates of VBT, the important points? So the 8 electrons in the octet rule is involved in this too. And so the s orbital, p orbital, and d orbital are also involved in the explanation of this theory. हाँ, so how they are involved? Involved है, लेकिन कैसे? Just one the word. outermost, so yeah, filled electron pair in the outermost orbital. So like boron, according to that, beryllium also had a filled
this thing because I had an electron pair in the second in the p shell. Okay, कच्चा पक्का है. Okay, I'll just tell you the important postulates. Valence bond theory states that a covalent bond is formed between the combining atoms when the half-filled orbitals having an unpaired electron with opposite spin are overlapping with each other. So half-filled orbital matlab an orbital which is having a single unpaired electron, let's say in the clockwise direction. Then bonding hone ke liye, the other orbital should also be half-filled with one unpaired electron and opposite spin, so that when they are combining with each other, they actually overlapping. There is a overlap of the two half-filled orbitals, and the moment they overlap, there is So the sigma and the pi bond and how it's directional, and the strength depends on the extent of overlapping and all that. correct. So जैसे ही वो overlap होते हैं, the electrons get paired up and the spins get neutralized. So the moment the electrons are paired and the spins are neutralized, there is formation of a single covalent bond. Likewise, इसमें multiple bonds भी बन सकता है, but ये जो simple मैंने बताया है, this is basically the s orbital of, let's say, hydrogen with one electron. This is also the s orbital of hydrogen with one another electron. And now what is formed is the H2 molecule and the type of the overlap is SS overlap. ठीक है, तो यहाँ पर important words की अगर मैं बात करूं, तो valence bond theory says that a covalent bond is formed by overlap of half-filled orbitals, and those half-filled orbitals should have the electrons with opposite spin. And the half-filled orbital should have nearly equal amount of energy. मतलब S S के साथ overlap कर सकता है, S P के साथ overlap कर सकता है, but S का D के साथ या S का F के साथ overlap would be almost impossible because the energy difference between those orbitals would be very high. ठीक है? Next, the extent of overlapping depends, or rather the extent of overlapping decides the strength of the covalent bond. जितना ज्यादा overlap होगा उतना bond strong बनेगा, और जितना weak overlapping होगा उतना bond weaker होगा. ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो orbitals है they have particular direction. We know that s orbital जो है वो तो non directional होता है, but it has a shape that is spherical. p orbital directional होता है, which is dumbbell shape. तो when they are overlapping, obviously जो molecule बनेगा उसका भी एक certain shape होगा and direction होगा. But that shape and direction which was not explained by octet rule was explained by the VBT, valence bond theory. समझा? Yes, sir. तो अब इसी लाइंस पे कॉम्प्लेक्सेस के टाइम पे VBT कैसे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता है, that is something we have to understand. So now we know that the complex is formed by overlapping of a metal cation with the ligands, let's say Cn minus. तो यहाँ पर भी there is a metal with a plus charge and the ligand with a negative charge. So because of the plus and minus, there is going to be a coordinate covalent bond. हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन प्लस एंड माइनस की वजह से these will have some attractive forces acting between them. And now Fe का orbital and the Sino का orbital will come close to each other and they will get Overlap. ठीक है, तो Fe+2 और Cn का जो orbitals है वो एक दूसरे के साथ overlap करेगा, and through that overlap there will be a coordinate covalent bond का formation like this. समझा? Yes, sir. अब यहाँ पर Fe2+ जो है उसके पास तो vacant orbital होगा, but Sino के पास there will be a
ऑर्बिटल विद अ लोन पेयर, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ पर ओवरलैप कैसे होता है? देयर इज अ वेकेंट ऑर्बिटल एंड अ filled orbital which are coming close to each other, and after overlap there is a sharing between the ion and the cyanoligand, and finally it forms a coordinate covalent bond between them. So once again, a coordinate covalent bond in the complex is formed by overlap of the orbital of metal which is vacant and the orbital of the ligand which is completely filled. समझा? Yes, sir. कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए, बट कोऑर्डिनेट के केस में एक वेकेंट होगा और दूसरा फिल्ड होगा. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes, sir. परफेक्ट. अब यहां पर भी जितना स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होगा उतना लिगेंड मेटल का इंटरएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. मतलब द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो dependent on the attractive force between the metal cation and the negative anion. Though it can be neutral, but अभी के लिए मैं cation और anion के basis पे ही बात कर रहा हूं. समझा? Yes, sir. Now the number of orbitals which are involved, that actually gives you the hybridization. If there are two orbitals involved, the hybridization is SP. sp and the geometry is So it will be linear. linear. Look at this table. Coordination number 2 indicates there are two ligands present in the complex, and if there are two ligands, there will be two orbitals which are involved of the metal for the overlap. So the hybridization, as we discussed, will be sp, and the geometry here will be linear. Next, we know that when the coordination number is 4, there are two types of geometries possible. Either it can be tetrahedral or it can be square planar. Now, when it is tetrahedral, the hybridization is So SP3 and DSP2. sp3, and square planar के केस में dsp2. ये मैं already isomerism में बता चुका हूँ, right? Yes. और मैंने बताया था कि dsp2 is something which is different from the sp3. अब ये कैसे होता है, why it is different, that you will understand in the examples which we are going to take in the next part. Then, with the coordination number 6, the hybridization can either be D2sp3 or sp3d2, which is different. अगर पहले D लिखते हैं मतलब इनर D ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाद में लिखते हैं यानी आउटर D ऑर्बिटल यूज हुआ है, वो आपको अभी समझ जाएगा. But in both the cases, the geometry will be Octahedral. octahedral. समझा? Yes, sir. Now just have a look at the examples. The first one is NiCl4 2 negative. Now for a given complex, there are many parameters which we have to discuss. तो एक बार एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, आगे के सारे एग्जाम्पल्स में छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सिमिलर. ठीक है? तो first is NiCl4 2 negative. Now for any complex, two things are important to be identified. What is the oxidation number of nickel? +2. +2. X minus 4 equal to -2, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. And what is the coordination number? 4. 4. So it's a tetrahedral or a square planar complex. अब कौन सा है मुझे अभी तक पता नहीं है. अब वो पता करने के लिए firstly we will look at the ground state electronic configuration of nickel with a +2. ना मुझे बताओ निकल का न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है निकल? So it is 28. So argon 4s2 and 3d So 3D8. 3d8.
3d8 is 28, 28 is 3d8. वैसे इजीली याद रखो, खाली क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन है, वरना जो आपका एटॉमिक नंबर है वही d इलेक्ट्रॉन्स भी है। जैसे आप कोबाल्ट को देखो तो 27, 3d7 4s2, मैंगनीज 25, 3d5 4s2, है ना शॉर्टकट? ठीक है। Yes, और वो नहीं भी अगर याद रहे तो वी नो दैट निकल का नियरेस्ट inert gas will be argon with 18 atomic number, followed by 4s2 and 3d remaining h electrons, right? अब यहाँ पर एज पर द शेल का ऑर्डर मैं बताऊंगा, तो पहले थर्ड शेल और बाद में फोर्थ शेल, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस पहले तो 3d दिखेगा और बाद में 4s, लेकिन फिलिंग के टाइम पे हमेशा 4s पहले भरेगा और 3d बाद में। दैट इज एज पर ऑफबाउ। यस और नो? yes sir. और द d सबशेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5. 5. तो यहाँ पर मैं इसको बाइफरकेट करके 5 ऑर्बिटल्स में दिखाऊंगा। 1, 2, 3, 4 and 5 orbitals, right? Now how the d8 electrons will enter in this? So So 1 first- unpaired, 4. It will be 1 unpaired and 3 paired. 2 unpaired, 3 paired. 2 unpaired and 3 paired. Yeah. हाँ, but enter कैसे करेगा? What is the order? So first all will become unpaired and then they will pair. हाँ, that is as per which rule? The Hund's rule. Perfect. So Hund's rule क्या बोलता है? That for multi-electron species, the electrons will first enter as a single electron and then the pairing will start. तो जब pairing होगा तो 3 of the electrons will be paired, 2 will remain unpaired. And 4s2 का 2 electrons तो है ही. Now this is for nickel in the ground state. Now when I say nickel plus 2, matlab there is a loss of So 4s electrons, both of them. 4s electrons. There is a loss of the electron from the valence shell. और valence shell इसका fourth shell होगा, यानी 4s. यानी यहाँ से 2 electron will be lost. So this will be 3d8 now, and 4s will become vacant. So 4s 0. Correct. Yes sir. अब 4s के बाद there will be a 4p orbital also, which will be filled or vacant? Vacant. Obviously vacant. ये 4p इलेक्ट्रॉन सॉरी 4p सबशेल है। अब मुझे बताओ, each of this chloroligand is donating how many electrons? 2. 2. And 2 electrons are accommodated in how many orbital? 1. So 1. 1. The fact ये है कि 1 orbital can have a max capacity of 2 electron. तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना डोनेट करने वाला है क्लोरीन? So 4 pairs. 4 pairs. And for that, how many orbitals will be required? 4. 4. Can you spot the 4 orbitals which are available for bonding now? So S and P. So what will be the hybridization? SP. So sp3. Tetrahedral. sp3, tetrahedral. समझा? मतलब जो आपको यहाँ पर orbitals दिख रहा है, these orbitals will mix and recast to form the 4 sp3 hybrid orbitals having equal energy and shape in space. And based on that, the chloro as the ligands will donate the 4 electron pairs to the 4 orbitals. तो ये तो मैंने ground state लिखा है, लेकिन अगर इसी को मैं चलो एक और स्टेप बता देता हूँ रादर। ये पहले वेकेंट है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ओके। नाउ हाइब्रिडाइज स्टेट में निकल प्लस 2 will have the 3d subshell as it is, because it is not participating in the bonding process. मतलब यहाँ पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे और 2 अनपेयर्ड। अब 4s and 4p mix and recast हो जाएगा, तो it will have equal energy. So I will be showing like this. Yes or no? Yes sir. And now the identity of the 4s and 4p will be lost, because after mixing and recasting, they all will be called sp3 each. हाँ कि नहीं? Yes sir. और अब 4 chloro as the ligands will donate its electron pair to these 4 orbitals. And finally, you can observe that these 4 electrons will have the 4 pairs of electrons donated by Cl
accepted by nickel. Got it? Yes, sir. तो final conclusion देखो, NiCl4 2 negative. Question क्या आएगा? What is the hybridization? So the answer is the complex is sp3. What's the geometry? Tetrahedral. Tetrahedral. And अगर इसका structure भी पूछ लिया तो now we can draw the tetrahedral arrangement. Ni with Cl, Cl, Cl and Cl. Chloro as a ligand is donating the lone pair, which can be shown like this. So you can observe the 4 chloro ligands are arranged in the form of a tetrahedron, and the total charge on this complex is 2 minus. 2 minus. हो गया इसका structure. ठीक है. अब इसके अलावा कुछ और properties हैं वो हम identify कर सकते हैं. If you look at the overall arrangement of the electrons, are there any electrons which are unpaired? Yeah. 2. Yes, there are 2 electrons which are unpaired, and the unpaired electrons lead to the magnetic characteristics of the complex. Matlab, this will be para or dia? So para. It will be para. Paramagnetic. So तीसरा question ये आ सकता है, the complex is para or dia. And with paramagnetic, if I ask you the Bose magnetron, how much will be the value? The root What's the formula? The root of n into n plus 2. So it will be Root root of 6. n into n plus 2. So Root Bose 8. magnetron is equal to 2 into 4, that is root 8. Correct? 2 root 2 का value है ना? Yes, sir. 2 into 1.41, which is equal to 2.82 bm. तो पैरामैग्नेटिक है और हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. Now such type of complexes are called high spin complex. क्या बोलते हैं? High spin complex. High spin मतलब there are unpaired electrons, and ये जो magnetic characteristics आता है, that is due to the spinning of the electrons. More the unpaired electron, more will be the spinning, more will be the magnetic property. So if a complex have the unpaired electrons, it's called high spin complex. अब अगर कोई और complex में electrons unpaired है ही नहीं, सारे paired है, then it will be called low spin complex. a low spin complex. समझा? तो इसी फॉर्म में हमें आगे के कॉम्प्लेक्सेस को भी स्टडी करना है. ये क्लियर है? Yes, sir. ओके. So हाँ. how do we know what's the spin on these 2 electrons? So it could be positive or negative, right? Oh, For so negative. H/2 or negative H/2, right? हाँ. See, So- by default, whenever the electrons enter as per Hund's rule, it is assumed to enter in the clockwise direction. Now, the direction is not clearly known. It can be clockwise, it can be anti-clockwise. लेकिन दोनों spin same होगा. Either it is plus half or it is minus half. That is not possible to be determined. So, but if it's the opposite, so won't it get cancelled out? No, it is not opposite. While the electron enters as a single electron first, they all enter in the particular direction which is same. तो सारे प्लस हाफ में जाएंगे या सारे माइनस हाफ में जाएंगे. It is never उल्टा. Okay, good. वरना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फंडा ही नहीं होगा ना. If you have 2 unpaired electrons and if you say there is plus half and minus half, then the overall molecule will become neutral in terms of spin ना. Yeah. Yes. तो उसमें कभी भी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम अज्यूम कर ही नहीं पाएंगे. Now, since we know that these species are found to be magnetic, that is why we can just understand the Hund's rule, which says that whenever electron enters in a particular subshell, it will always enter as a single electron with a particular spin, which is same. समझा? Yes, good. Okay. Now, instead of chlorido, I replace it by cyano. So I have NiCl4 2 negative.
Now, will there be a difference in the conclusion when the chloro is replaced by cyano? No, sir. Yeah, sir. Dev says no. Josefa, why yes? Also, it's NiCN4, right? Yeah. There were 4 chloro in the earlier, and now there are 4 cyano in this. Will the conclusion of the complex ka geometry, shape, magnetic property be different? Ayana, So Cl is different from Cn, right? Cn won't have S and P orbitals. this S and P orbitals are of ligand or of the metal? No, so like so over here you've drawn the metals this thing, but for chlorine you said that the 4sp3 of chlorine goes for the No. I never said about chlorine ka hybrid orbitals. Chlorine are simply the lone pair donors. तो उनका जो भी आउटर शेल में लोन पेयर होगा वहां से वो डोनेट करेगा. इट विल बी द p orbital of chlorine which is involved. हाइब्रिडाइजेशन मेटल के ऑर्बिटल्स का होता है, नॉट ऑफ द लिगेंड्स. जैसे डू यू रिमेंबर मीथेन? व्हेन आई से मीथेन इज sp3, द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट ऑफ द मॉलिक्यूल. किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था? Carbon. इट वाज ऑफ द carbon. कार्बन एटम ना. सेंट्रल Yeah. एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है. बॉन्डिंग एटम्स का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं डिस्कस करते हैं हम. तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन को ओवरलैप करता है, दैट इज हाउ CH कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. करेक्ट जोसेफा? So but then the nature of this thing is also different now. हाँ. Cn and Cn. Now that is what you can say. The nature of the ligand is different. Now chloro as a ligand versus cyano as a ligand will have a different strength. So because of the different strength, there will be a different influence on the central metal. And because of that, जो conclusion हमने NiCl4 2 negative में किया है, the same conclusion is not observed. Theoretically, अगर मैं आपसे simple पूछता कि क्या conclusion same आने वाला है, as Dev said, it will be same आना ही चाहिए. लेकिन जैसे हुज़ैफा ने बोला कि it depends on the influence, it depends on the nature of the ligand. Yes, उसकी वजह से difference आता है. अब क्या difference है? Let's understand. सबसे पहला information is same ना. The oxidation number of nickel is +2. +2. And the coordination number is 4. 4. तो उसके बेसिस पे ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है. अब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. अगेन इन द ग्राउंड स्टेट आई विल राइट निकल +2 which is having a 3D configuration with 8 electrons entering by Hund's rule as 3 paired and 2 unpaired. ऐसे ही था और 4s खाली था, राइट? Yes or no? Yes, and P also is vacant. And P also is vacant. This is the same thing which I have drawn in the previous example. Ground state तक कोई problem नहीं है, क्योंकि ground state हम central metal का लिख रहे हैं. अब यहाँ पर cyano as a ligand approach करेगा nickel +2 metal ion को. Now cyano is a much stronger ligand as compared to the chloride. And because of the very strong ligand which the cyano is, these two electrons doesn't remain unpaired, they tend to get paired. जैसे ही साइनो अप्रोच करता है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाते हैं. अब इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओवर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल. ठीक है, आगे चल के हम एक फंडा पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. That spectrochemical series gives you a complete order of the strength of the ligands. Strength of the ligands. बराबर? तो उसमें CO यानी कार्बोनाइल is the strongest ligand
followed by cyanide, then ammonia and then बाकी सारे हैं. लेकिन साइनाइड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्लोराइड के कंपैरिजन में. दैट इज समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दैट इज एज पर द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, फंडामेंटली सोच सकते हो कि साइनो में कार्बन के ऊपर लोन पेयर है और क्लोराइड में क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है. ऑब्वियसली कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है. अग्रीड? Yes, sir. Doyle, why are you showing the wall? What is the use of then keeping the camera on? Just as a formality? Sorry, sir. Okay, so chloride is a weak ligand and cyano is a strong ligand. तो अब से आप इसको याद रखोगे WFL, that is a weak filled ligand, weak filled ligand, and cyano would be called as a SFL, strong filled ligand. और जब भी strong ligand होगा, याद रहे electrons are going to get what? Paired up. Paired up. That's it. Electrons are going to get paired up. तो hybridized state जब आप लिखेंगे तो nickel plus 2 will have the 3d 8 electrons and now all the 8 electrons will appear to be So paired. And three. paired. And one of the d orbital now has become Vacant. vacant. So अब what orbitals will be used in the bonding when the cyano approaches the nickel? कितने DSP2. ऑर्बिटल की जरूरत है? 4. और वो 4 ऑर्बिटल्स अब कौन से होंगे? डी एस पी पी. मतलब ये ऑर्बिटल यहां से डिटैच हो जाएगा because hybridization में the orbitals which get involved in mixing and recasting now have the same energy. तो एक D इन्वॉल्व हुआ, S इन्वॉल्व हुआ और 2 P इन्वॉल्व हुआ. मतलब ये जो 4 orbitals है they would be called dsp2 hybrid orbitals. Now do you understand how a D is involved in the hybridization? Yes. So now there will be 4 cyano as a strong field ligand which will donate its lone pair to the 4 hybridized orbitals, and finally a charo orbital will have the paired electrons. And dsp2 mein the 4 orbitals always appear in the same plane. That is why we call the geometry to be Square plane. So now let's do the conclusion. ये conclusion ही सबसे important है. NiCN4 2 negative is hybridization. DSP2. DSP2 and geometry. Square planar. Square planar. Para या dia? Diamagnetic. Now it's diamagnetic with Bose magnetron equal to 0. obviously dia है मतलब कोई भी magnetic moment है ही नहीं, 0. ठीक है, will it be high spin or low spin? Low spin. Now this is a low spin complex. Is the conclusion clear? देखो इसमें MCQ में 5 अलग अलग MCQ आ सकता है. NiCN4 2 negative as a complex is having dsp2 hybridization, square planar geometry, it's diamagnetic with 0 bm Bose magnetron, and it's a low spin complex. Simple? Yes, sir. अब तीसरा भी निकल का कॉम्प्लेक्स है which is NiCO4. NiCO4 2 negative. Sorry, it's a neutral complex. Now once again 2 information at the start. Oxidation number of nickel 0. 0 and coordination number 4. 4. And CO is a very very strong field ligand. In fact it is strongest. तो अब अपना ground state electronic configuration of nickel neutral है. मतलब now the 4s electrons will not be lost. Yes or no? Yes, sir. So I will have 3d8 with electrons entering as a single first and then getting paired. और उसके बाद मेरे पास होगा 4s का electron which is paired.
और उसके बाद 4p का orbitals which will be vacant. This is how the ground state appears for nickel, right? Yes, sir. अब जब CO approach करेगा, what is the first thing which will happen? So the thing that happened in the last case, What say now? the electrons get paired up. The electrons will get paired up, making one d orbital available. Plus, अब अगर आप लॉजिकली सोचो तो d अवेलेबल है, s ब्लॉक्ड है और p अवेलेबल है, तो कैन आई हैव d एंड p3 का ओवरलैपिंग, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग? ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है क्या dp3? No, sir. No, sir. नहीं. So what happens is, to make the orbitals of the similar energy mix and recast to form the hybrid orbitals, two things happen over here. In the presence of CO, these electrons get paired up, and the d orbital, which becomes vacant, acquires the electron from the 4s into it, making the s and now the 3p available for hybridization. So can you tell me what is the hybridization? So sp3 tetrahedral. करेक्ट. समझा? CO के इन्फ्लुएंस में दो चीजें होती है. एक तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएगा, पेयर होने के बाद D खाली हो जाएगा, तो 4s का इलेक्ट्रॉन D अपने अंदर एक्वायर कर लेता है. तो अब यहाँ पर 3d10 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, and now the S and the P will be mixed and recast to form the 4sp3 hybrid orbitals. And now the 4 carbonyl ligands will donate its lone pair to the 4 vacant orbitals. Finally, यहाँ पर electrons pair up दिखेंगे आपको, right? Therefore, quickly, NiCO4 is क्या लिखे? So tetrahedral. sp3 Diamagnetic tetrahedral. magnetic moment is Diamagnetic magnetic moment is 0 and low spin complex. correct. 0 Bose magnetron and low spin complex. समझा? Yes or no? Yes, sir. Yes. ठीक है. So two things to remember over here, that CO के presence में electrons pair up तो होता है because it's a strong field ligand, and the 4s electrons are switched into D, making the S and the P's available for hybridization. बस simple है. अब कुछ octahedral complex की बात करते हैं. तो let's say I have COF6 3 negative. Once again, to start with, I will write to information. Oxidation number of cobalt is +3. +3 and coordination number is 6. 6. Now cobalt अपने neutral form में, what is the electronic configuration? So 3d7 4s2. Peconi is 26, 27, 28. Cobalt 27 है, मतलब shortcut बोला मैंने. It will be argon 3d7 and 4s2. अब मुझे बताओ कोबाल्ट का 3+ मतलब there is a loss of So 2 4s and 1 3d electron. 3 electrons, 2 from 4s and 1 from 3d. Now the configuration of cobalt 3+ will be argon के बाद 3d 6. and 4s 0. 0. So now 3d6 will have the electron entering as per Hund's rule. So पहले 5 electrons will enter as a single electron and 6 will pair up. And now the S is vacant and even P is vacant. How many ligands do we have which is donating the electrons? So 6. So how many orbitals are required? 6 orbitals. तो क्या orbitals available है hybridize होने के लिए? No, sir. So if 3 of them pair up, then there'll be 6, right? Okay. In the 4th energy level, we have 4s, we have 4p. And do we have any other orbital? So 4d. 4d है ना?
4f भी है, तो यहाँ पर 4d भी है, and that is also So it has 0 electrons. vacant. तो अब यहाँ पर F कैसा लिगेंड है, उसके बेसिस पे आप बोलोगे पैर होगा कि नहीं होगा. Now F is actually a weak filled ligand similar to chlorido, and that is why the electrons will get paired or not. So won't. So won't. They won't. So now the orbitals which are available for hybridization will be. sp3d2. That's how we get sp3d2. समझा? Yes. ठीक है, तो 3d6 में only one electron is paired, rest 4 are unpaired. After the hybridization, the 4s का, 4p का and 4d का 2 orbital mix and recast. तो यहाँ पर ये 2 ही orbital involved होंगे. The 3 will remain vacant as it is. So I will get 6 sp3 hybrid orbitals. So now there will be 6 fluorido ligands which will be donating the electron pair to these 6 orbitals. Yes or no? Yes, sir. Okay, so now can you tell me the conclusion for cobalt F6 3 negative? So it is sp3d2 octahedral paramagnetic with Bose magnetron equal to 2√6. Value बताओ. So it will be around √24, so 2√6. मैंने बोला था ना कि जो भी आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, Bose magnetron would be 4 point something. In fact, root of 24 is closest to root 25. The answer will be slightly less than 5, which is 4.9 bm. ये भी एक शॉर्टकट ही है ना. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट. जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2.82, वो तो पता ही है अपने को. 3 के लिए अराउंड 3.9, 4 के लिए 4.9, 5 के लिए 5.9 अप्रॉक्स लिख सकते हो if you don't get the correct value. It's okay. समझा? And this will be a. So it will be a high spin, but isn't it para? अरे sorry. बोला पैरा, लिखा डाल. Paramagnetic with 4.9 bm and it's a very high spin complex because 4 unpaired electron है, मतलब काफी ज्यादा spinning होगा. समझा? Yes, sir. अब यहाँ पर कोबाल्ट का ही एक और कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, कोबाल्ट NH36 with a 3+. तो टू इंफॉर्मेशन क्या लिखते हैं? So oxidation number is +3 and coordination number is 6. And the ligand is Amine. amine, and Yes, amine strong. is now a strong field ligand. तो अब अगर मैं पीछे यहां से देखूं, क्या फर्क आने वाला है? So 3 will get paired up, so it'll become D. So It will be D D2sp3. हुज़ैफा, all the 4 electrons will get paired ना? Pairing तो हमेशा even number में होगा. Yeah, so क्यों बोला? D2sp3. अच्छा. So these two will pair and this two will pair, making 2D available for hybridization. तो अब यहाँ पर 3D का inner orbital is available for bonding, not the outer 4D. तो D2sp3 लिखना और sp3d2 लिखना फर्क है. Yes. अब समझा? Yeah, so it'll be diamagnetic, low spin complex, and octahedral. Perfect. ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. I'm not doing the stuff again. So the conclusion is this complex is it will be D2sp3 complex, which is octahedral, and all electrons paired मतलब diamagnetic with 0 Bose magnetron and a low spin complex. समझा? Yes, sir. Okay, now a point to be noted.
निकल के ग्रुप में ही देयर इज प्लैटिनम एंड पैलेडियम। निकल के बाद पैलेडियम आता है, फिर प्लैटिनम आता है ना। इट्स इन द ग्रुप 10 of the periodic table of the transition elements family, right? Yes or no? Yes, sir. मतलब अब अगर निकल का NiCl4 2 नेगेटिव sp3 है, तो पैलेडियम Cl4 2 नेगेटिव should also be sp3 and platinum Cl4 2 negative should also be sp3 correct, क्योंकि सेम ग्रुप में है तो प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकल इज अ स्मॉलर ट्रांजिशन मेटल, बट पैलेडियम एंड प्लेटिनम इज अ बिगर ट्रांजिशन मेटल। मतलब उनके जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर ह्यूज एंड बिगर इन साइज। Now because of the bigger size of the orbitals here, हमने NiCl4 2 नेगेटिव में क्या बोला था कि क्लोरो इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। बट पैलेडियम, प्लैटिनम या कोई भी बिगर ट्रांजिशन मेटल रहेगा ना, उसमें irrespective of ligand, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, it is observed that the electrons get paired up. And now the situation would be every time similar to NiCN4 2 negative, चाहे CN4 हो या Cl4 हो, चाहे strong field हो या weak field हो, मतलब every time with the coordination number 4 the hybridization will be dsp2 dsp2। समझा? मतलब ये डायरेक्ट नोट बता रहा हूं आपको that for complexes, या बाद में लिख लेना अपने टेक्स्ट बुक में या नोट्स में, for complexes of bigger transition metals, for complexes of bigger transition metals, the hybridization is always dsp2 if the coordination number is 4, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा? so d2sp3 हमेशा d2sp3 irrespective of what? so the ligand, The type of ligand, whether it is SFL or WFL doesn't matter. मतलब in short conclusion, PtCl4 2 negative का अगर hybridization पूछा तो आंसर will be so dsp2 बस कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है। सेंट्रल मेटल अगर प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, मतलब 3D के ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के अगर 4D या 5D के कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 d2sp3। एक सिंपल शॉर्टकट बताया मैंने, dsp2 एंड स्क्वायर प्लेनार। अंडरस्टूड? yes sir. ठीक है, सो दिस इज द VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके एग्जांपल्स मैंने जो दिए हैं उसका एक स्टैंडर्ड फ्लो मैंने मेंटेन किया है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसके न्यूट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो लिख लो, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, एंड नाउ व्हाटएवर इज द अवेलेबल डी कॉन्फ़िगरेशन वो लिख लो। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, यू डिसाइड वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी पेयर्ड और नॉट। अगर पेयर होगा तो जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और पेयर नहीं होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब जब ये sp3d2 है ना, तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इट्स एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड नाउ? yes sir. एंड जो d2sp3 है दिस वुड बी कॉल्ड इनर ऑर्बिटल। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
Got it? Yes, sir. Okay. Yeah, next. Based on the VBT, predict structure and magnetic behavior of the NiNH3 6 3+ complex. तो इस So टाइप से आपको diamagnetic, क्वेश्चन right? मिलेगा. हाँ, तो सबसे पहले फ्लो क्या है? चलो मैं वापस आपसे फ्लो डिस्कस करता हूँ. व्हाट इज द फ्लो? विल डिस्कस द होल कंक्लूजन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है. चलो स्टेप बाय स्टेप. It's a strong ligand. Sorry, first, so oxidation state is +2 for nickel, and नहीं. Why +2? Josefa. +3. Sorry, +3 and coordination number 6. and ligand is It's a strong field ligand. strong field ligand. Now nickel का ground state configuration क्या है? It's a 3d8 and 4s2. 2. So after the loss of 3 electrons, it will be 3d7. 3d7. Now 3d7 में how many electrons are unpaired? So 1. Unpaired. So कितने हैं? 3. 3 will be unpaired, right? So, but okay, yeah, good. है ना? 3d8 4s2, 2 will be lost from here, 1 will be lost from here, and now 3d7 would be written as 5 electron single, 2 paired और बाकी 3 unpaired. ठीक है. अब यहाँ पर अमोनिया अप्रोच करेगा. वी नो दैट अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होगा. नाउ आर देयर द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप? फुल्ली पेयरिंग होगा क्या? No, sir. तो अगर मैं बोलता हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा तो 1d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा. Yeah, sir. अब अगर एक d वेकेंट होगा तो d के बाद s है, p है और बाद में d है. तो कैन वी गेट अ हाइब्रिडाइजेशन लाइक d sp3 एंड d? अब बोलोगे कंबाइन करो तो d2sp3 जैसा ही है, बट ऑब्वियसली इट इज नाइदर d2sp3 नॉर sp3d2. कोई भी नहीं है ना, क्योंकि ये इनर d है और ये आउटर d. आप इसको क्लब नहीं कर सकते हो. डू यू अग्री? Yes. नाउ एक और बात मैंने बोला था कि when the hybridization happens as per VBT, the overlapping orbital should have nearly the same energy. आकी नहीं? Yes. मतलब क्या थियोरेटिकली 3D का ऑर्बिटल और 4D का ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट हो सकता है? No, sir. It is not possible. Is the logic behind this clear? Yes. Now, despite of NH3 being a strong field ligand, these electrons do not get paired. Because if they were to get paired, then the hybridization would be of this type, which is not practically possible. मतलब इस तरह से ये होगा ही नहीं. समझा? तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो पाते और फिर d के 2 ऑर्बिटल वेकेंट होते, then the d2sp3 configuration would have been possible. आ रहा है समझ में? Yeah. मतलब I won't say it's a special case or an exception or something. There is a logic and a reason behind this complex not to be d2sp3, but it is actually sp3d2. Is the logic clear? So it's paramagnetic. Right? Yes. अब सब चेंज हो जाएगा ना. जो हम थियोरेटिकली सोच रहे थे डाया होगा, वैसा नहीं है. और क्यों नहीं है, रीजन दिया मैंने. समझा ना? Yes, sir. Josefa, clear? Yes. So the 3d7 configuration would remain as it is. And now this S, P3 and D2 will be mixed and recast.
to form the 6 sp3d2 hybrid orbitals. Sorry, sp3d2 hybrid orbitals, which will accept the electrons from the strong field ligands, that is 6 ammonia से यहाँ पे डोनेट होगा. ठीक है. तो फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन एज sp3d2 sp3d2 and not d2sp3. ध्यान देना. Then octahedral, octahedral, then paramagnetic, and 3.9 paramagnetic, 3.9 bm. Perfect. the high spin complex and outer orbital. High spin complex and outer orbital. Super. Very good. ये कंक्लूजन अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. क्लियर? Yes. ठीक है. So whatever examples of the VBT complexes I have discussed, please note down them and write it in your notes. जो भी नोट्स आप बना रहे हो, एक बार सारे एग्जाम्पल्स को आप लिखोगे. जैसे मैंने 5 एग्जाम्पल्स ये किए, निकल के, 2 कोबाल्ट के, और ये भी एक निकल का NiNH3 3+ वाला कॉम्प्लेक्स. टोटल 6 एग्जाम्पल्स है, वो आप प्रैक्टिस करोगे in the same form which I have discussed. Okay. Yes, everyone. Yes, sir. Chalo, I'll stop here.